सभी ने ट्रेनिंग के दौरान जो टेम्परामेंट दिखाया वह अपने आप में न केवल इम्प्रेसिव था बल्कि मैं कहूंगा कि एक्सीलेंट था। और आप चारों सचमुच हमारे लिए रत्न हैं। न सिर्फ आप चारों रत्नों बल्कि आपके परिवारजनों को आपकी सफलता के योगदान के लिए और इस सफलता में योगदान देने वाले अन्य भी व्यक्तियों को तथा समस्त देशवासियों को मैं इस मंच से बधाई देता हूं। और इस समारोह के माध्यम से आप सभी का सम्मान करके मुझे बेहद खुशी हुई है। खुशी ही नहीं हुई है, मैं स्वयं को भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आमतौर पर हमारी आर्म्ड फोर्सेस का कोई व्यक्ति या कोई ग्रुप जब एवरेस्ट या और सफल माउंटेनियरिंग के बाद लौटता है तो मेरी यह कोशिश रहती है कि मैं उनसे मिलूं। कोई अथाह समुद्र को मापते हुए मिशन को पूरा करता है, तब भी मैं उनसे मिलता हूं, उन सबको मैं बधाई देता हूं। ऐसे में जब हमारे देश का लाल अंतरिक्ष की असीमित ऊंचाइयों को छूकर लौटे और आसमान में भारत का नाम रोशन करे तो मैं भला उनसे मिलने और उनके सम्मान करने से कैसे चूक सकता हूं। मुझे सच में भारत मां के सपूत ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत और अभिनंदन करते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है। और साथ ही उनके अन्य जो साथी हैं, ग्रुप कैप्टन पीवी नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्ण और ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, मैं यही कहना चाहूंगा आप सबके ऊपर समस्त देशवासियों को आप सब पर भी नाज है। और नाज इसलिए है कि आप सब ने देशवासियों का मस्तक ऊंचा किया है। साथियों, हम बचपन से ही आसमान को बड़े कौतूहल से देखते आए हैं। आप में से कुछ लोग गर्मी के मौसम में रातों में छत पर जरूर सोए होंगे। मैं तो सोया हूं, पता नहीं आप सोए हैं कि नहीं सोए हैं। हम सब जब सोते थे तो कभी आसमान के रंग को देखते थे तो कभी हम लोग तारों को देखते थे। हमें लगता था कि काश हमारे पास भी पक्षियों की तरह ही पंख होते और हम उड़कर आसमान तक जाते। कहने का मतलब है कि करीब करीब हम सब का सपना हमेशा से आकाश छूने का रहा है। आज हम सब जिनके स्वागत समारोह में एकत्र हुए हैं, इन्होंने अपने साथ साथ हमारे सपनों को भी जिया है और मुझे लगता है कि हमारे सपने को हमसे स्वाभाविक रूप से जोड़ रहे हैं। साथियों, यदि स्पेस और उसके एलिमेंट्स के साथ हमारे रिश्ते की बात की जाए तो आप देखिए कि स्पेस हमारी प्रकृति का तो पार्ट है ही, साथ ही साथ हमारे ऋषियों ने हमेशा से स्पेस को अध्यात्म, धर्म और ज्योतिष की दृष्टि से देखा ही है। उन्होंने इसे जिज्ञासा और रिसर्च की दृष्टि से भी देखा है। प्राचीन भारत के खगोलविद आर्यभट्ट और भास्कराचार्य ने उस विज्ञान की नींव रखी थी जिसे आज आधुनिक दुनिया स्पेस साइंस कहती है। हमारे पूर्वज स्पेस को लेकर एक बेहद समृद्ध विरासत हमें सौंप गए और आज आप देखिए कि वही परंपरा हमारे वैज्ञानिकों, हमारे युवाओं और हमारे अंतरिक्ष यात्रियों में उसी जिज्ञासा और साहस के रूप में जीवित है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि साइंस बैकग्राउंड के हैं और हम सभी जानते हैं कि स्पेस साइंस यह विज्ञान का एक फ्रंटियर एरिया है। जिस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स और जेनेटिक्स विज्ञान के फ्रंटियर एरियाज हैं, उसी प्रकार स्पेस साइंस भी विज्ञान की एक फ्रंटियर एरिया है। और इस एरिया में प्रगति करने के लिए निश्चित तौर पर हमें एक टॉप क्लास साइंटिफिक इकोसिस्टम चाहिए होता है और मैं समझता हूं इस दृष्टि से भी भारत निरंतर प्रयत्नशील है और आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज का भारत अर्थ के सरफेस से ऊपर की दुनिया में लगातार आगे बढ़ रहा है और आज जब हम भारत की स्पेस जर्नी की ओर देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन
केवल स्पेस में उपग्रह भेजने तक सीमित नहीं है। आज भारत चंद्रमा से लेकर मंगल ग्रह तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। आज भारत गगनयान जैसे मिशंस के लिए भी पूरी तरह तैयार है। साथियों, मैं इसे केवल तकनीकी उपलब्धि के रूप में नहीं देखता, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का वह नया अध्याय है जहां हम विश्व की बड़ी स्पेस पावर्स के बीच पूरे गर्व के साथ खड़े हो रहे हैं। साथियों, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम केवल लैबोरेटरीज और लॉन्च व्हीकल्स तक ही सीमित नहीं है। यह हमारी राष्ट्रीय आकांक्षाओं और वैश्विक दृष्टि का एक प्रतीक है। चंद्रयान से लेकर मंगलयान तक हमने यह सिद्ध किया है कि सीमित संसाधनों के बावजूद इच्छा शक्ति यदि असीमित हो तो कोई भी लक्ष्य हमारे सामने स्वाभाविक रूप से छोटा पड़ जाता है। साथियों, भारत का विजन स्पष्ट है। भारत स्पेस को केवल रिसर्च के क्षेत्र के रूप में नहीं देखता है, बल्कि हम इसे आने वाले कल की इकोनॉमी, सिक्योरिटी, एनर्जी और ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के रूप में भी देखते हैं। इस स्पेस से प्राप्त टेक्नोलॉजीज, चाहे वह संचार उपग्रहों, मौसम की निगरानी से संबंधित हों या प्राकृतिक आपदाओं से निपटना हो, आज भारत के गांव-गांव और खेत-खेत तक वह अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और आने वाले समय में स्पेस माइनिंग, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन और प्लैनेटरी रिसोर्सेज भी मानव सभ्यता की दिशा बदल देंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए इस यात्रा में भारत पीछे नहीं रह सकता। हमें आगे बढ़ना है, हमें नेतृत्व करना है, और यही कारण है कि आज हम अपने उन नायकों का अभिनंदन कर रहे हैं जो केवल अंतरिक्ष यात्री ही नहीं, बल्कि इस राष्ट्रीय स्वप्न के अग्रदूत हैं। और मुझे यह भी बताया गया है कि आज से 40 साल पहले जब राकेश शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अंतरिक्ष में गए थे, तो उसके कुछ ही समय बाद शुभांशु शुक्ला का जन्म हुआ था। उनके जन्म के साथ ही जन्मा एक सपना, एक दिन मैं भी आसमान में इस धरती को देखूंगा। और आज 40 साल बाद न सिर्फ शुभांशु के बचपन का देखा सपना पूरा हुआ, बल्कि भारत भी एक बार फिर अंतरिक्ष तक अपना परचम लहराया। और मैं जिस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी लखनऊ से आता हूं, शुभांशु शुक्ला वहीं के रहने वाले हैं। ये हमारे वोटर भी हैं। साथियों, जब हम स्पेस की बात करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि मानव शरीर मूल रूप से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के लिए ही बना है, यानी हम सिर्फ धरती पर रहने के लिए बने हैं। इसलिए जब कोई मनुष्य अंतरिक्ष में जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसे माइक्रोग्रेविटी, रेडिएशन एक्सपोजर, आइसोलेशन और कन्फाइंड एनवायरनमेंट जैसी कई चुनौतियों का सामना उसे करना पड़ता है। और इसके अलावा स्पेस मिशन पर जाने वालों को कई प्रकार की साइकोलॉजिकल और साथ ही साथ फिजियोलॉजिकल भी जो चेंजेज हैं उनका भी सामना करना पड़ता है। कई बार लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस में एस्ट्रोनॉट्स के रेजिलियंस और वेलबींग को बनाए रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। इसलिए एक अंतरिक्ष यात्री के लिए फिजिकली, मेंटली और इमोशनली और साइकोलॉजिकली अपने आप को तैयार रखना यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ऐसे में इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन मुझे यहाँ जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। लोगों ने कहा साहब कोई डिफेंस मिनिस्टर शायद गया नहीं है या पहले कभी कोई गया होगा, तो मैंने कहा जब कोई नहीं गया है तो मैं जरूर जाऊंगा। और ऐसे में इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन एक अंतरिक्ष यात्री को ट्रेन करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं कुछ समय पहले वहां गया भी था। उनके इक्विपमेंट और वहां की ट्रेनिंग का माहौल मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगा। और हमारे साथ जो लोग भी थे, मैंने उनसे इसकी चर्चा भी की थी।
अभी हमारे सामने उसी इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन की सफल प्रतिमूर्ति के रूप में शुभांशु दिखाई दे रहे हैं। और मुझे देखकर गर्व हो रहा है कि शुभांशु ने वह जिजीविषा व साहस दिखाया है जो भारत की मिट्टी का प्रतिनिधित्व करता है। और मैं मानता हूं कि हमारे शेष जो तीनों हैं, बस अवसर मिल गया होता तो शायद ये भी किसी से कम नहीं थे। यही कारण है कि शुभांशु शुक्ला जैसे व्यक्तित्व हम सबके लिए गर्व का विषय है। मुझे जानकारी दी गई कि सामान्यतः एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग प्रक्रिया 2 से 2.5 वर्ष तक चलती है। क्यों डॉक्टर साहब, सही है? लेकिन शुक्ला जी ने अपनी लगन और समर्पण से इसे मात्र 2.5 महीने में पूरा कर दिया। मैं समझता हूं यह उपलब्धि न केवल उनकी व्यक्तिगत क्षमता का प्रमाण है, बल्कि हम भारतवासियों के परिश्रमी मन का भी यह प्रतीक है, उसको भी सिंबलाइज करता है। आमतौर पर एक रक्षा मंत्री के रूप में जब भी मैं रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए किसी संस्थान में जाता हूं तो मैं उनसे सिविल और मिलिट्री फ्यूजन की बात भी मैं करता हूं। मैं उनसे ऐसे प्रोडक्ट बनाने पर भी, ऐसे टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने पर या ऐसे काम करने पर भी जोर देता हूं जो डिफेंस सेक्टर के लिए तो काम करें ही, साथ ही साथ सिविल सेक्टर के लिए भी काम करें। शुभांशु शुक्ला उसी सिविल मिलिट्री फ्यूजन के प्रतीक हैं। वे भले ही वायुसेना की वर्दी पहनते हों, लेकिन जब वे अंतरिक्ष में गए तो केवल आर्म्ड फोर्सेस के ही नहीं, भारत के ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के वह प्रतिनिधि बने। और मैं कह सकता हूं सिविल सेक्टर को आपका यह कंट्रीब्यूशन, यह इतिहास में दर्ज किया जाएगा। और मुझे बताया गया कि आपने स्पेस में खेती भी की है। और मैं बतला दूं, ये किसान परिवार से आते हैं और आपके अंदर का किसान स्पेस में जाकर भी बाहर नहीं निकला। भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और भारत का कोई किसान स्पेस में जाकर मेथी और मूंग की खेती करेगा, इसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होगा। निश्चित रूप से आपका अनुभव हमारे आगामी मिशंस में बहुत ही मददगार सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे यह भी बताया गया कि आप बजरंगबली के भी भक्त हैं और श्री हनुमान जी के हनुमान चालीसा तो कई बार पढ़ी होगी आपने वहां, जब ऊपर नीचे जो हुआ होगा। और हनुमान जी के बारे में तो कहा जाता है कि बाल्यावस्था में भी उन्होंने सूर्य देव को फल समझकर निगलने का प्रयास किया था। और वह कथा केवल एक मिथक नहीं, बल्कि जिज्ञासा, साहस और असीम ऊर्जा का यह प्रतीक है। आज वही भारत भूमि जहां ऐसे देवताओं की लीलाएं हमारी कथा और हमारी कहानियों में हैं, वहां से निकला हनुमान जी का ही एक भक्त आसमान की ऊंचाइयों को छूकर लौटा है और हम सभी के बीच में मौजूद है। और मैं मानता हूं यह केवल एक विज्ञान की विजय नहीं है, यह एक विश्वास की, साहस की गूंज है। यह केवल एक टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट नहीं है, यह साधना का संदेश भी है। ऊपर जाना यह कोई सामान्य बात नहीं है, स्वयं में एक साधना है। और यह केवल भारत का गौरव नहीं है, यह संपूर्ण मानवता की प्रगति का एक प्रमाण है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, यह स्पेस यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक ये शुरुआत है। अभी भारत को स्पेस सेक्टर में बहुत लंबी यात्रा तय करनी है। और साथियों, आज हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां अंतरिक्ष केवल सैन्य शक्ति या टेक्नोलॉजिकल स्किल को ही सिंबलाइज नहीं करता है, यह मानव सभ्यता की सामूहिक यात्रा का एक नया पड़ाव है। भारत ने हमेशा विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। और आज अंतरिक्ष में हमारे वैज्ञानिक और हमारे अंतरिक्ष यात्री उसी संदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। साथियों, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की यह यात्रा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। यह बताएगी कि चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हृदय में श्रद्धा हो
और कर्म में शक्ति हो तो आकाश भी है, हमारी सीमा नहीं रह जाता है। आज जब हम उनका अभिनंदन कर रहे हैं और साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन पीवी नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और ग्रुप कैप्टन अंगद प्रसाद का भी अभिनंदन कर रहे हैं, तो मैं केवल इतना ही चाहूंगा कि आप सबने न केवल भारत का नाम रोशन किया है, बल्कि आपने संपूर्ण विश्व को यह संदेश दिया है कि एक आम भारतीय वह सब कर सकता है जो दुनिया असंभव समझती है। इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार फिर आप सभी रत्नों को और आपके परिवार के सभी सदस्यों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही साथ उज्जवल भविष्य के लिए अपनी हार्दिक आयु में बड़ा होने के कारण शुभकामनाएं भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Indian Air Force is a very important partner for French Air and Space Corps. We will touch the sky with drone. In today's era of multi-domain threats, air superiority is non-negotiable. At the heart of our nation's defense lies a robust, integrated air defense network. Layered, adaptive, lethal. From cutting-edge radars that peer deep into hostile skies, to missiles that strike with unmatched precision, to combat aircraft that dominate the aerial battle space. Every second, our air warriors monitor, assess, and respond, preserving the sanctity of India's skies. Where fear has no flight. Where every altitude, every adversary, unshaken in storm, unmatched in strife, forged by fire, driven by duty. In 1971, it was the Indian Air Force that struck with surgical precision. The governor's house in Dhaka neutralized. A message written in the sky: India will not hesitate. In the heights of Kargil, when the enemy took the high ground, it was the Indian Air Force that turned the tide, pounding peaks at impossible altitudes. And when terror crossed the line in Pulwama, the Indian Air Force answered with Balakot, crossing limits, hitting where it hurts precisely. IAF responded with precision, speed, and resolve. Across the Himalayas, over the island chains, over oceans deep, the Indian Air Force stands ready, vigilant, unseen, unmatched. As the skies turn into a canvas and engines roar to life, the Surya Kiran aerobatic team, the blazing reds,
the master of formation flying, and the beating heart of the Indian Air Force's flying excellence. For the first time, the Vice Chiefs of India's Army, Navy, and Air Force soared together, a symbol of jointmanship and shared resolve. IAF and Army Chief flying together. An extraordinary moment as the chiefs of the Air Force and Army shared the cockpit, strengthening bonds beyond the battlefield. Formation fly past. These flights are more than milestones. They are messages of strength, unity, and trust, echoing across the skies and generations. 4 service chiefs from France, India, Germany, and Spanish Air Force flying during exercise. In an unprecedented show of global military harmony, 4 chiefs of friendly foreign forces flew together. Unity in air, friendship and spirit. When the disaster strikes, the Indian Air Force is the first responder. We respond swiftly, fearlessly, and relentlessly. Be it rising waters or raging. मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, जो हमारे बीच आज आए। अब किसी कारणवश वह यहाँ से जाएंगे। धन्यवाद महोदय कि आपने अपने इतने व्यस्त समय से समय निकालकर आप इस प्रोग्राम में हमारे बीच आए। अब मैं अनुरोध करूंगी आप सभी का कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। On June 25th, 2025. Captain Shukla, are you ready for the ride? 5, 4, 3, 2, 1, and liftoff. The skies lit up with a new chapter of India's space journey. For 3 nations, a new chapter in space takes flight. Group Captain Shubhashu Shukla of the Indian Air Force, flying for ISRO, became the first Indian to live and work aboard the International Space Station. This was not just one man's mission. It was the dream of a billion hearts. For the first time since 1984, our tricolor once again floated proudly in the silence of space. And this is just the beginning. India now prepares for its first human spaceflight, the Gaganyaan mission. A team of trained astronauts, our future Gagan Yatris, are ready to carry the nation's dream into the vast expanse of space. From a little boy with dreams in his eyes, to a warrior of the skies and beyond. Shubhashu's journey is the story of India itself, rising higher, reaching further, daring the impossible. Namaste. I am Group Captain Shubhashu Shukla. During his mission, he and his crewmates carried out advanced experiments in microgravity, from tiny organisms to food crop seeds.
research that will help shape the future of space exploration and life beyond Earth. Up there, the numbers themselves tell a story of wonder. 16 sunrises and 16 sunsets every single day, orbiting Earth 320 times, traveling at nearly 28,000 kilometers per hour, spending 20 days, 2 hours and 59 minutes beyond our world, covering a distance of over 1.3 crore kilometers in space. This mission was more than science. It was discipline of the Indian Air Force. It was vision of ISRO. And it was determination of India. With Shubhanshu's footsteps in the stars, India has shown the world that the sky is no limit. From Earth to orbit, from dreams to reality, a new era of Indian space exploration has begun. Today, we celebrate not just an astronaut, but a nation ready to claim its place among the stars. The Indian Air Force, ISRO, and India. Together, we rise beyond. अब मैं अनुरोध करूंगी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का कि वह मंच पर आए और अपने अस्मरणीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बिताए पलों से हमें अवगत कराएं. सर प्लीज. यस. Jai Hind everyone. Before I begin, I would like to say AVM Agarwal has already said that I have a habit of speaking less. It's not really a good platform. I've been given 30 minutes to speak. I will try and make up for it. Jai Hind to each and every one of you. I wanted to start this talk today that I have on a different note, but when I arrived here today, I was so overwhelmed by the familiarity of what this is, what I have been used to all my life. People in blue, familiar faces, old friends, everything just came rushing back to me in my head. So first of all, let me say that how happy I am to be back in this hall with all of you. We've been away since 2020, but this just feels like home. I do have a few anecdotes, and I would start with the experience that AVM Agarwal mentioned, that he was explaining to you about space flight, how in space, if you are standing and breathing, you will have a carbon dioxide pocket in front of your face, and oxygen would be coming behind you. And that would cause drowsiness or headaches or space fog. Your mind will stop working. I don't know, a lot of you would be aware, but Indian Air Force has been efficiently replicating this same phenomena in the briefing rooms. When the flight commander is sitting in front of you with the FRC in hand and asking you emergencies, suddenly, I didn't know, but it was carbon dioxide. Anyways, my story, I heard Chief of the Air Staff also mentioning, I came across on the internet that accidentally he filled up the form for NDA, and I have a very similar story. I did not intend on joining the defense, but I did. And I filled up a form which one of my friends bought, and eventually one thing led to another, and the medicals, and landed up in the NDA. And I remember I was sitting in the officer's mess, waiting for getting allotted whichever squadron I have to go to, and I had another kid next to me who came and he was sitting. He was from Sainik School, Tilaiya. And I had a purely civilian background. And then the adjutant came and he started inquiring him, okay, so which sports do you play? And he started, I play football, I play hockey, volleyball, basketball. I think he said everything. And then he turned to me and said, what do you play? I said, cricket. And he said, okay, both of you go to the hunter squad. And
I had no idea of what it is, but I suddenly saw this guy next to me. He started sweating. And by the time we walked to this squadron, he was really jittery, and I was the one consoling him. You know, so what? It is another squadron out of the 15th squadron. It doesn't matter. Little did I know that we started sweating once we entered the squadron, and it never stopped for next 3 years. Why I say this is important, because I think those 3 years really prepare you well for anything that life throws at you in future. When you have gone through those hardships very early, anything that comes your way in future, you know you are prepared. And I think this is very easy, a comparison. Difficult times, whenever you face them, you can go back to those times and say, is it worse than that? And I can tell you nothing is worse than that. So it really sets you up for life. It sets you up for success. When I joined the Air Force, as a personality, I would say I was really shy, reserved, and sometimes, doubting yourself whether you are good enough or your decisions are good enough or whether you belong in the group we are talking about. But I think Air Force picked me up from that position and brought me to where I am today, and I think that has been very transformational for me. I would say that Air Force in general, but cockpit in particular, has been my greatest teacher in life. And you come across various things, various situations, and then you go from one situation to another, and you learn so many things that really develops your character. And I owe it to this uniform that I'm wearing, whatever time I have spent, to be the person that I was, who was ready to fill in the role that I'm filling right now. So thank you to the Indian Air Force. And sometimes, so I said I was reserved and shy. I think the Air Force took me from that spectrum and put me on the other side. And so when I went for this mission, my commander was Peggy Whitson, who is the most experienced American astronaut, having spent 695 days in space. I think she beats the record of some satellites as well. But when I first met him, my first joke to her was that, and I think a lot of you would already know this, but the joke was that, do you know what is the difference between a god and a pilot? And she said no. And I said, the God doesn't think that he's a pilot. So moving on, the journey in the Air Force has been great. I think I was commissioned in 2006, and I got posted to various places. In 2013, I got the opportunity to do the Fighter Combat Leader course at Gwalior, which I really enjoyed. And thereafter, I was posted in Srinagar for a short stint, and I decided I wanted to be a test pilot, and I applied for that course. I had finished my course in 2018 when this announcement was made by the Honorable Prime Minister from the Red Fort that very soon a son or daughter of India would fly to space. And in 2019, as Sir was mentioning, that the circular for selection came. And there were certain QRs or criterias, and I was there. I was not eligible in the original QRs because they wanted at least 2 years of experience as a test pilot. And I was really sad, and I was thinking, what should I do? I do not even qualify to apply. I went to my OC at that time, and I said, sir, I would really want to apply. Can we get over this QR requirement or something? And he looked at me and he said, after 41 years, this opportunity has come. Do you think anybody cares about QRs? Everybody in AST has applied. Just go and apply. Nobody cares. So I did apply, and then obviously the next 6-7 months were very grueling. Doctors became our worst enemies during those few months. I did not say to them then because they were doing my selection, but I did think in my mind that they were blood-sucking vampires. Wherever you go to IAM, they would be standing with those tubes. Like, we want 50 ml, we want 100 ml. It was a grueling experience, but it was type 2 fun. The fun that is only good in hindsight. You really do enjoy it when it is happening. Sir has already given a description of how it happened. We went to Russia, we came back, and then we went a few times. And then once the 4 of us were selected, we landed up in Russia and we started training with the cosmonaut group at the Gagarin Cosmonaut Training Center. And
I think that was a very fascinating experience for me. It was not very different from what we do in the Air Force. Like, the training is similar because you are supposed to be interacting with the machine. And so the pattern is similar, but there are certain aspects which come in, because when you go to space, you really are going to be living by yourself. So you have to learn various other disciplines which are not usually a part of our training. So I think that was very enlightening and enriching for us, this entire training in the Soyuz. We got trained as the flight engineer from the left seat of the Soyuz capsule, and we came back. We came back and we started working with ISRO for the project mission Gaganyaan. And we started interacting with designers of how to evolve our own capsule to make it as robust and as reliable as all the other capsules are. But then suddenly in 2023, I think this announcement was made again by the Prime Minister when he went to US, and he said that we should have a US-India collaboration and a mission to space. And as a fallout of that, Axiom 4 mission happened. Axiom 4 mission was a 2-week mission to the International Space Station, and my profile in this mission was as the mission pilot. So there is a commander, there is a mission pilot, and then there are 2 mission specialists.